आज हम शुरू करने वाले हैं परफेक्ट नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, ए पॉजिटिव इंटीजर in is called a perfect number if sigma of n equals to 2n। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कि नेचुरल नंबर का सेट इज कॉल्ड ए परफेक्ट नंबर इफ सिग्मा एन। हमने सिग्मा फंक्शन ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। सिग्मा एन दैट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन इक्वल्स टू 2n। ओके, नाउ एग्जांपल, फर्स्ट वन, लेट n इक्वल्स टू 6। अगर 6 को हम प्राइम डिकम्पोज करें तो 2 to the power 1 इंटू 3 to the power 1। देयरफॉर सिग्मा 6 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1। क्योंकि हमें क्या पता है, n इक्वल्स टू p1 to the power अल्फा 1 इंटू p2 to the power अल्फा 2 इंटू डॉट डॉट pk टू द पावर अल्फा के होगा। तो सिग्मा n इक्वल्स टू p1 टू द पावर अल्फा 1 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई p1 माइनस 1 इंटू p2 टू द पावर अल्फा 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई p2 माइनस 1 डॉट 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 pk टू द पावर अल्फा के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई pk माइनस 1। ये सिग्मा n का फॉर्मूला होता है। सो सिग्मा ऑफ 6 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 3 इंटू 4 इक्वल्स टू 12, दैट इज इक्वल्स टू 2 इंटू 6। सो वी शो दैट फॉर 6 we get sigma 6 equals to 2 into 6. So 6 is a perfect number. Now second example, let n equals to 28, that is equals to 2 square into 7. Therefore sigma of 28 equals to 2 minus 1 because square है, so 2 minus 1 divided by 2 minus 1 into 7 square minus 1 divided by 7 minus 1, that is equals to 7 into 8 equals to 56, that is equals to 2 into 28. So 28 is also a perfect number. Now the third example, let n equals to 496, that is equals to 2 to the power 4 into 31 to the power 1। आप प्राइम डिकम्पोजिशन करके ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। देयरफॉर सिग्मा ऑफ 496 इक्वल्स टू 2 to the power 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1 इंटू 31 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 31 माइनस 1, दैट इज इक्वल्स टू 31 इंटू 32 इक्वल्स टू 992, that is equals to 496. Therefore 496 is also a perfect number. अभी 496 के बाद जो परफेक्ट नंबर होता है वो होता है 8128। आप चाहे तो 2 to the power k minus 1 इंटू 2 to the power k minus 1 इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुट करके परफेक्ट नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पर k इक्वल्स टू 2 3 डॉट 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 ऐसे आप वैल्यू पुट करके परफेक्ट नंबर्स निकाल सकते हैं। प्राइमरी प्रॉपर्टीज ऑफ सिग्मा एंड टाउ फंक्शन, हमने ऑलरेडी सिग्मा और टाउ फंक्शन डिस्कस कर लिया है। नाउ प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सिग्मा एंड टाउ फंक्शन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, सो दैट टाउ is a multiplicative function.
Proof. Let mn be two natural numbers with GCD of mn equals to 1. मतलब m और n are co-primes. Okay. Let m equals to p1 to the power alpha 1 into p to the power alpha 2 into dot pr to the power alpha r, and n equals to q1 to the power beta 1 into q2 to the power beta 2 dot qr to the power beta s. Okay, where p1 p2 dot pr and q1 q2 qs are all डिस्टिंक्ट प्राइम्स. ओके, सभी के सभी डिस्टिंक्ट प्राइम्स है. एंड अल्फा आई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 एंड बीटा जे इज ऑल्सो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 फॉर आई इक्वल्स टू 1 2 dot r and j equals to 1 2 dot s. Okay, therefore tau of m, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, इक्वल्स टू जो फॉर्मूला होता था अल्फा 1 प्लस 1 अल्फा 2 प्लस 1 dot अल्फा r प्लस 1 मल्टीप्लीकेशन. ओके, एंड टाउ ऑफ n इक्वल्स टू बीटा 1 प्लस 1 इंटू बीटा 2 प्लस 1 dot बीटा s प्लस 1. नाउ mn इक्वल्स टू p1 to the power alpha 1 p2 to the power alpha 2 dot pr to the power alpha r into q1 to the power beta 1 q2 to the power beta 2 dot qs to the power beta s. Therefore tau of mn equals to alpha 1 plus 1 into alpha 2 plus 1 dot alpha r plus 1 into beta 1 plus 1 beta 2 plus 1 dot into beta s plus 1, that is equals to tau of m into tau of n. Therefore tau is a multiplicative function. मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस करके रखा है, जहाँ अगर कोई मल्टीप्लिकेशन फंक्शन होता है तो एफ ऑफ एम एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन होता है. हमने दिखा दिया टाउ ऑफ एम एन इक्वल्स टू टाउ ऑफ एम इंटू टाउ ऑफ एन. सो टाउ इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, हेंस प्रूव्ड.